गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मैं हूँ हॉलस्टैट जाने की तैयारी में। फ़िलहाल तो मैं बस स्टैंड पे हूँ, साल्ज़बर्ग बस स्टेशन। बस 6:25 पे आएगी, 150 नंबर। ठंड काफ़ी है, गलती किया मैंने, जैकेट भी पहन लेना था। चले देखते हैं क्या होता है। तो हूँ बस में मैं, ठंड काफ़ी है। ये बस बीच में चेंज कर रहा है, दो चेंजेस के बाद देखते हैं कब तो पहुँचता हूँ। अभी फ़िलहाल तो बस चेंज करना है, 542 लेना है, हॉलस्टैट जाएगी, वो भी एक बीच में चेंज करना होगा। अभी मैं हूँ हॉस्टल पे आइस कैव और 5 फिंगर जाने के लिए। अच्छी बात मेरे संग ये हुई कि मैं जैकेट लेके तो आया नहीं था, और बिना जैकेट के उन लोगों ने मेरे को लेने से मना कर दिया, क्योंकि वहाँ -2 डिग्री टेम्परेचर है। तो मैं जैकेट ढूंढ रहा था और काउंटर पर गया पूछने के लिए कि मैं रिटर्न जाना चाहता हूँ, तो कैसे जाना होगा बस कैसे। तो बोला क्यों रिटर्न जाना चाहते हैं आप? तो मैंने बताया कि मैंने अपना जैकेट नहीं लाया है, मैं जाता हूँ नीचे जैकेट खरीद के आता हूँ। तो महतरमा जो थी बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने कहा आप मेरा बोरो कर लीजिए। बस बोरो किया, टिकट खरीदा और जा रहा हूँ ऊपर 5 फिंगर और कोल्ड केव, जो आइस केव है, उसे देखने के लिए। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ, लेकिन फिर भी सब अच्छा ही चल रहा है। टिकट स्कैन किया, चलता हूँ। वाह, टेम्परेचर तो माइनस में है। केबल कार है, 5 फिंगर के ऊपर जा रहा हूँ। ठंड तो काफी है। चलते हैं आइसकेप की तरफ। ठंड तो अपने चरम सीमा पे है। गर्मी है सितंबर में, फिर भी इतना ठंडा है। ठंडी के दिनों में यहाँ आएंगे तो क्या हाल होगा, सोचें जनाब। श्योर वी आर गोइंग टुवर्ड द आइसकेप, राइट? वाह, थोड़ी हाइकिंग जैसी हो रही है, पहाड़ों पे चलना। This way? It's very easy, ma'am. Come on. ओह, लोगों को आने में बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ। ठंड काफ़ी है, और स्पेशली जब आपको पहाड़ों पर चढ़ने का आदत ना हो तो ऐसा हो सकता है आपके साथ।
के अंदर जा रहे हैं। ग्रुप नंबर 3 हमारा था। देखते हैं क्या क्या है नज़ारा देखने को। पता नहीं क्या है आइस कैप के अंदर। जो भी है कुछ अच्छा ही होने वाला है, इतना तो कह ही सकता हूँ। The following tour will take approximately 50 minutes. The cave is 3 kilometers long, but we only will see a third of it. But there are many stairs ahead of us because the exit is located 40 meters above us. First 15 minutes will be ice free, but then we reach the ice. Also, seid ihr bereit? Are you ready? Yeah. Let's go. जैसे इन्होंने बताया कि 15 मिनट तो आइस फ्री होगा, फिर आइस आएगा सामने। देखते चलें क्या क्या देखने को मिल रहा है। What is the temperature here now? Here it's around 4 degrees Celsius. 4. Yes. Okay, where it will be minus? We are around 0 to -1 degrees at the ice part. Later, huh? Yeah. Okay, thank you. फिलहाल है उल केव के अंदर। यहाँ का टेम्परेचर 1 डिग्री। जो दिख रहा है सारा हजारों साल पहले का है। Yes, it's back. उल केव के अंदर उल्फ। The whole year it is cold here? Yeah. Even in summer, winter, no problem. In the summer it has between -1 and -3 degrees Celsius. Okay. And in the winter it can have -30. -40? 30. Wow. 30. Wow. So still people come? In the winter you can't visit the cave because it would be too dangerous. Okay. Also because the snow outside is up to 5 meters high. Oh, so it is closed. Yeah. We can go to 5 Finger only. I think so, yes. And you can go skiing on this mountain. Wow. So right now we are in the Parsival Dome, which is the biggest and widest hall here in the ice cave. And here you can also see the Great Iceberg, which is also the emblem of the ice cave. When the explorers measured the Great Iceberg for the first time 100 years ago, it was only 3 meters tall. Nowadays it's 9 meters tall. तो आइस मेल्ट भी कर रहा है, जैसे यहाँ पे। यहाँ तो नहीं है मेल्ट कर, यहाँ तो सॉलिड है। इस जगह पे आइस मेल्ट कर रही है। अंधकार होने की वजह से उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे दिख रहा है कि मेल्ट कर रही है। Are in the Tristan Dome, which is the place where most of the ice is located. We are right now standing on a 25-meter solid layer of ice. The reason for that, we can see it over there. The water can enter this part of the cave very easily. And this part is also the closest to the exit, which means during the winter season it cools down the most. If you are brave enough, you can now cross the bridge. Otherwise, you have to stay here forever. Or just take the second path. तो बैंड में आ गए हैं निकलने के लिए। अच्छा, बहुत ही अच्छा ट्रिप था। जरूर आए, एंजॉय करेंगे।